Okay, so the concept under discussion is expanded octet rule. Expanded octet rule. Now, I hope that you are familiar with the concept of octet rule. Octet rule says that atom wants to have 8 electrons in its valence shell for stability. Octet rule suggests that for stability, 8 electrons are required in the valence shell. Okay. Now, expanded octet rule suggests that more than 8 electrons are also possible in the valence shell after bonding. So let us discuss that where more than 8 electrons are possible and where you cannot have more than 8 electrons. Now remember this thing that elements of period 1, those elements which are present in period 1 like hydrogen and helium are present in period 1. So they have only one shell, only one shell. So these elements cannot have more than 2 electrons in their valence shell, okay? Because first shell can only accommodate 2 electrons. So the period 1 elements have one shell only, so they cannot have more than 2 electrons, have more than 2 valence electrons, right? Okay. Next comes period 2. So in period 2, members of period 2 have second shell as valence shell. So if we consider the electronic configuration, we have 1s and then 2s and then 2p. So for period 2 elements, second shell happens to be the valence shell. Second shell is valence shell for all the members of period 2. And if second shell is valence shell, you can consider here, this is second shell, 2s and 2p. So S can accommodate 2 electrons and P can accommodate 6 electrons. So it means that maximum 8 electrons can be placed in second shell. Maximum 8 electrons in second shell, right? So it means that all the members of period 2, they strictly follow octet rule, okay? Almost all the members of period 2, they follow octet rule, And octet rule means that these elements wants 8 electrons in the valence shell to get stable, right? Because the second shell is the last shell for period 2 members, and second shell cannot accommodate more than 8 electrons, right? So you cannot place more than 8 electrons in the valence shell of period 2 members. Okay, now move to period 3. This is period 3. So now all the members of period 3 have 3 shells. Third shell is the valence shell for period 3 members. Third shell is valence shell. Okay. So but if you consider the electronic configuration, so electronic configuration is like this: 1s, and this is second shell, which has 2s and 2p, and third shell has 3s, 3p, and 3d. These are the subshells for the third shell. So now consider the third shell situation. Okay, the third shell is the valence shell. So third shell maximum, how many electrons can be placed? 2 electrons can be placed in S subshell, 6 electrons can be placed in P subshell, and 10 electrons can be placed in D subshell. So maximum 18 electrons can be placed. Maximum 18 electrons can be placed in third shell. Okay. And all the period 3 members have third shell as valence shell. So what it means? It means that members of period 3 can have more than 8 electrons in their valence shell. Okay, why? Because members of period 3 have third shell as their valence shell. So members of period 3 can have more than 8 valence electrons. ये जो period 3 के members हैं, इनके valence electrons can be more than 8, but maximum electrons third shell में 18 तक आ सकते हैं. So third shell में cannot more than 18 electrons cannot be accommodated, right? तो अगर थर्ड शेल वैलेंस शेल है तो 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 18 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा और 18 से कम वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो सकता है अगर थर्ड शेल वैलेंस शेल है.
ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे, अगर इफ द सेकंड शेल इज वैलेंस शेल, तो 8 इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल इन द वैलेंस शेल। लेकिन अगर थर्ड शेल वैलेंस शेल है, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी बिटवीन 8 एंड 18, राइट। तो इसको अगर वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। This is expanded octet rule, right? So having electrons in the valence shell which are more than 8 will refer to this expanded octet rule. तो पीरियड 3 के जो मेंबर्स हैं उनके थर्ड शेल वैलेंस शेल होगा जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेम गोस फॉर पीरियड 4। So if you consider period 4, so period 4 में fourth shell will be the valence shell. Fourth shell is valence shell. And with the fourth shell में, you know, in fourth shell we have 4s, 4p, 4d, and 4f. S में 2 electrons can be placed, P में 6, D में 10 और F में 14. So it means कि जो fourth shell है वो maximum 32 electrons accommodate कर सकता है। Maximum 32 electrons can be placed in fourth shell. तो fourth shell में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं हो सकते, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 प्लेस होंगे। तो फोर्थ शेल भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, फोर्थ शेल के मेंबर, सॉरी फोर्थ पीरियड के, पीरियड 4 के जो मेंबर्स हैं वो भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। द फोर्थ शेल इज द वैलेंस शेल, देन more than 8 valence electrons, more than 8 valence electrons are possible. Okay, so if we summarize this whole discussion, so we will summarize it like this, that period 1 members they follow doublet rule. Period 1 के जो members हैं वो doublet rule follow करेंगे, okay, they will follow the doublet rule. जो period 2 के members हैं they follow octet rule. जो पीरियड 3 एंड अबव के मेंबर्स हैं, पीरियड 3 एंड अबव, so they may follow octet rule and they may follow expanded octet rule, right? So they may follow depending upon molecule to molecule vary करेगा, may follow octet rule। ये पॉसिबल है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हों, ये भी पॉसिबल है कि 8 से ज्यादा हों, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। अच्छा, अब पीरियड 3 एंड अबव के जो मेंबर्स हैं, ये अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। यू हैव टू मॉनिटर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सिचुएशन वेरी करेगी, राइट। तो पीरियड 3 एंड अबव के जो मेंबर्स हैं उनमें एबिलिटी है कि उनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। तो इन सम मॉलिक्यूल्स दे फॉलो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल और कुछ मॉलिक्यूल्स में दे फॉलो ऑक्टेट रूल। तो यू हैव टू कंसीडर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बाद यू वुड बी एबल टू टेल कि ये एटम जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है या एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो पीरियड 3 एंड अबव के जो मेंबर्स हैं वो ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं फॉर पीरियड 3 एंड अबव एलिमेंट्स। लेकिन जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। और जो पीरियड 1 के मेंबर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। अच्छा, अब let us say कि apply this concept. So if I consider the example of SF6, so you know sulfur has 6 valence electrons. Sulfur is from group 16. लेकिन sulfur is from period 3 as well. So period 3 में है sulfur, तो sulfur का third shell valence shell है. It means that sulfur can accommodate more than 8 electrons in its valence shell. So what happens in SF6 case, fluorine has 7 valence electrons. So fluorine will share 1 electron with 1 electron of the sulfur atom. Another fluorine atom also has 7 valence electrons. So fluorine एक electron share कर रहा है sulfur से. This goes for this fluorine, same goes for this fluorine and for other fluorine atoms. तो fluorine के 7 valence electrons हैं, तो हर fluorine एक electron share कर लेगा with sulfur, ठीक है। अच्छा, अब बेटा आप नोट करें कि जो फ्लोरीन है उनके ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहे हैं। फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं वैलेंस शेल में। फ्लोरीन के 8 हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और सल्फर का बेटा देखें तो ये दिस इज द वैलेंस शेल फॉर सल्फर, दिस इज वैलेंस शेल फॉर सल्फर। तो अगर सल्फर को देखें तो नाउ इन दिस केस 2 4 6 8 10 एंड 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आफ्टर बॉन्डिंग सल्फर के 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सल्फर है वो फॉलो कर रहा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल है, फॉलोज एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो बेटा ये आप ध्यान में रखें कि जब आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करें तो जो सेंट्रल एटम है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं होने दें सेंट्रल एटम के, जो एटम्स अटैच हो रहे हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आप कंप्लीट करें। फ्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, और जो सेंट्रल एटम है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं इन द मीनवाइल वो डेवलप होने दें। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट के लिए जो एटम है इसको पीरियड 3 एंड अबव का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, और सेंट्रल एटम होना चाहिए। एटम should be from period 3 or above, period 3 or above, or it should be central atom, should be central atom, right? तो यानी कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच एटम्स हैं उनके आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, और जो सेंट्रल एटम है फिर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। So this is SF6. So sulfur has 6 covalent bonds with 6 fluorine atoms. Right? This is SF6 जिसमें सल्फर फॉलो कर रहा है expanded octet. Another example आप देखें कि वो that is SO3. Right? अब अगर हम सल्फर को कंसिडर करें, सल्फर has 6 valence electrons. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अच्छा अब नाउ 3 ऑक्सीजन आर देयर एंड यू नो दैट ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच एटम्स हैं उनके ऑक्टेट रूल आपने फॉलो करना है, उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, और फिर सेंट्रल एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएं वो होने दें। अब यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स तभी कंप्लीट होंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा ऑक्सीजन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। तो यहाँ बेटा नोटिस करें कि ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच एटम्स है उन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, और सेंट्रल एटम जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है, जो अटैच एटम्स हैं उनके लिए ऑक्टेट रूल नहीं अप्लाई करना। तो दिस इज द अनदर ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। सो नाउ दिस ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑक्सीजन को देखें, अब आप देखें कि तीनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आप सल्फर को चेक करें, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर फॉर सल्फर, जस्ट चेक इस सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर अगर देखें तो 4 and 4 8 and 4 12, it means sulfur is following expanded octet for sulfur, and yes, sulfur can follow expanded octet. Sulfur belongs to period 3, sulfur belongs to period 3, and sulfur is the central atom of this molecule, ठीक है, तो एक एटम को सेंट्रल एटम होना चाहिए और पीरियड 3 या अबव से बिलोंग करना चाहिए, तब ऐसा एटम एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो कर सकता है। और जो एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हैं उनके उन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन देखें वो 8 हैं, तीनों ऑक्सीजन को देखें तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखें। अगर हम बॉन्ड्स को शो करें तो बॉन्ड्स विल बी लाइक दिस। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड में देयर एग्जिस्ट 3 double bonds. 3 double bonds are present in sulfur trioxide. Okay, so then comes let us say SO2. So once again, sulfur is from period 3, right? So sulfur has 1, 2, 3, 4, and 5, 6, and group 6 है. Sulfur belongs to group 6 or group 16 and period 3. And you have 2 oxygens. तो जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम नहीं है, ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं वैलेंस शेल में, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तभी पूरे होंगे जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। So one oxygen here sharing 2 electrons, the other oxygen here sharing 2 electrons. So now both oxygen has 8 valence electrons. लेकिन आप सल्फर के अब चेक करें, how many valence electrons are there for sulfur now? 4 and 4 8 and 10. So 10 valence electrons हैं, 10 valence electrons हैं for sulfur. Sulfur is following expanded octet.
or yes, sulfur can follow expanded octet because sulfur belongs to period 3 और sulfur is the central atom. ठीक है. अब बेटा नेक्स्ट बात ये थी कि जो पीरियड 3 एंड अबव के मेंबर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करें. इट्स नॉट नेसेसरी कि पीरियड 3 एंड अबव के मेंबर्स हर वक्त एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करें. दे कैन फॉलो ऑक्टेट रूल एज वेल. लाइक H2S को देखें. ठीक है. अब H2S में सल्फर हैज 1 2 3 4 5 6. सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6 और 16. So sulfur has 6 valence electrons. So one hydrogen will share electron here. The other hydrogen will share electron here. So now the valence electrons for sulfur are 8. Valence electrons for sulfur are 8. So now here sulfur follows octet rule. तो yes, octet rule अगर follow करें तब भी valence shell stable होगा. और अगर पीरियड 3 एंड अबव के मेंबर एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करें तब भी उनका वैलेंस शेल स्टेबल होगा. दोनों केसेस में वैलेंस शेल विल बी स्टेबल, सो द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल. राइट. अच्छा. सो नाउ another example is, let us say PCl3, okay, and then we will come for PCl5. So PCl3, phosphorus belongs to period 3 and phosphorus has 5 valence electrons. So PCl3 is like this. One chlorine will be here. अब चूंकि क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है तो क्लोरीन के तो ऑक्टेट रूल ही फॉलो करना. जो एटम सेंट्रल एटम नहीं है, अटैच्ड है सेंट्रल एटम के साथ, उसके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करवाएं. सो वन क्लोरीन, ईच क्लोरीन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस. अब आप देख लें तीनों क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है. एंड नाउ फास्फोरस को देखें, विच इज द सेंट्रल एटम. So this phosphorus has 8 valence electrons. Has 8 valence electrons. So here phosphorus follow कर रहा है octet rule को, right? लेकिन PCl5 को बेटा चेक करें. Now in PCl5, phosphorus has 1, 2, 3, 4, and 5. These are the 5 electrons for phosphorus. So one chlorine will be here. The other chlorine will be here. तो अब आप देखें क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं. One more chlorine will be here. This is chlorine. And the last chlorine is here. So हर क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं. लेकिन फास्फोरस को बेटा चेक करें. तो फास्फोरस के हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 2, 4, 6, 8 and 10. 10 valence electrons are for phosphorus. 10 valence electrons. So here phosphorus has expanded octet. Right? So phosphorus belongs to period 3 and phosphorus is the central atom for this molecule. So yes, for these reasons phosphorus can follow expanded octet. लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि पीरियड 3 के मेंबर हमेशा एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो करेंगे. इट वेरीज फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. अब PCl3 में फास्फोरस का ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन PCl5 में फास्फोरस का एक्सपेंडेड ऑक्टेट है. राइट. एंड इट इज स्टेबल. बोथ दीस कंपाउंड्स आर स्टेबल. PCl5 इज स्टेबल एंड PCl3 इज आल्सो स्टेबल. राइट. लेकिन बेटा अगर इफ आई कंसीडर NCl5, NCl5 will be unstable. Why? Why NCl5 is unstable? Nitrogen has 5 valence electrons like this. So nitrogen भी तो अपने 5 electrons को share कर सकता है with 5 chlorine, लेकिन still NCl5 will be unstable. So why NCl5 is unstable? ये अगर हम बना दें, चलो डॉट एंड क्रॉस तो हम hypothetically बना लेंगे. लेकिन अब आप नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा देखें. तो नाइट्रोजन के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पीरियड 2. तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पीरियड 2. तो नाइट्रोजन के 2 सेकंड शेल वैलेंस शेल है और सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अकोमोडेट हो सकते. दैट इज व्हाई NCl5 इज अनस्टेबल. Unstable. Why? Because nitrogen has second shell as valence shell. And more than 8 electrons not possible in second shell. Okay. More than 8 valence electrons not possible in second shell. That is the reason why NCl5 is unstable. Okay, so now if we
take another example, and that is xenon tetrafluoride, right? So xenon को देखें. अच्छा, yes बेटा, आपके जहन में होगा कि xenon noble gases, they don't make any compound, they are not involved in bonding. Yes, majority of the noble gases are not involved in the bonding. Noble gases bonds नहीं बनाते, लेकिन xenon के कुछ fluorides and oxides observe हुए हैं. So xenon is the element from the noble gases which can combine with fluorine and oxygen. Okay, so yes, xenon tetrafluoride is one of the molecule you need to keep in mind. So xenon has 8 valence electrons. Noble gas है तो 8 valence electrons हैं. So one fluorine will share electron here. So देखें fluorine ने तो अपना octet complete करना. So this fluorine has complete octet. The other fluorine is here. This fluorine का भी octet complete है. The other fluorine will share one electron here to complete its octet, or the last fluorine will be here to complete its octet. So now बेटा आप xenon को check करें. तो xenon के how many valence electrons? This xenon has 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 valence electrons are now available for this xenon, right? So 12 valence electrons means that this xenon has expanded octet. And yes beta, so xenon can follow expanded octet क्योंकि ये period 4 या period 5 के किसी period 4 या किसी period 5 का member है, and I think it is from period 5, और xenon is the central atom as well. तो हमने पढ़ा था period 3 and above का जो भी member होगा और वो central atom भी हो molecule का तो वो expanded octet को follow करेगा. So here it is following this expanded octet. अगर हम bond wise show करें तो xenon has 4 bonds with 4 fluorine atoms. So those bonds will be represented like this. ठीक है, lone pair आपकी choice आप show करते हैं या नहीं करते. Okay, so